Combien de jours encore pourra-t-elle vivre? Cette jeune Pakistanaise, mère de 5 enfants, croupie en prison depuis 5 ans. En 2010, Asia Bibi est condamnée pour blasphème à la peine capitale par pendaison. Elle fait appel de cette décision. Un nouveau procès devait donc se tenir mardi dernier, mais l'audience a été reportée sine die. À vrai dire, cela fait déjà 4 fois que le procès est reporté pour des motifs visiblement ambigus. C'est donc une attente interminable pour cette femme séparée de sa famille depuis sa condamnation. L'affaire commence il y a 5 ans lorsque la jeune chrétienne commet l'irréparable en buvant de l'eau dans un puits supposé réservé aux musulmans. Parce qu'elle est chrétienne, ses voisines l'accusent de souiller l'eau du puits, de la rendre impure. Mais quand on est chrétien au Pakistan, répondre à un musulman est audacieux. Asia Bibi en a fait les frais en tenant tête à ses voisines. « Pauvre chienne, sais-tu que ton Jésus est un bâtard ?» lui dit-on avant qu'elle réponde « Je ne veux pas me convertir, j'ai foi en ma religion. Qu'a fait votre prophète pour sauver les hommes? Pourquoi devrais-je me convertir ?» Je pense, poursuit-elle, que Jésus aurait un point de vue différent de celui de Mahomet sur la question de la pureté de l'eau. Scandalisée par cette réponse, les voisines d'Asia Bibi l'accusent de blasphème. Elle est aussitôt jetée en prison et vit dans des conditions de détention déplorables. Depuis le début de cette affaire, 2 personnalités politiques pakistanaises ont pris la défense d'Asia Bibi. Les 2 ont été assassinés. Selon l'index mondial de persécution, le Pakistan est le 8e pays du monde le plus dangereux pour les chrétiens. The grief and agony of 2 young girls who wait to see if the Pakistani government will execute their jailed mother. Whenever I see her picture, I cry, says 12-year-old Isham. This month, a Pakistani court sentenced Isham and Isha's mother, Asia Bibi, to death, not because she killed, injured, or stole, but simply because she said something. Prosecutors say Asia Bibi insulted Islam and the Prophet Muhammad. They say the alleged incident happened when she was picking berries in this field in the town of Itanwali, just about 2 hours west of Lahore. Court records show Asia was sharing a bucket of drinking water with fellow workers, but when she dipped her cup, her fellow workers refused the water, saying it had been touched by a non-Muslim woman. Asia Bibi is a Christian. The women argued. Mafia Sitar and her sisters say they were there and heard Asia's insults. She said your Muhammad had worms in his mouth before he died, Sitar told us, a crude way of saying Muhammad was no prophet. The town cleric Kari Salam reported the incident to police, who arrested Bibi. After nearly 15 months in this jail came the conviction and the death sentence, per Section 295C of Pakistan's Penal Code. Whoever defiles the name of the Prophet Muhammad shall be punished with death or imprisonment for life. When I heard the decision, my heart ached, says Asia's husband, who denies she ever insulted Muhammad. He says death threats forced him and his daughters, one of them disabled, to flee their village. Human rights groups have long blamed Pakistan's blasphemy laws for persecution and violence against religious minorities, like this attack last year on a Christian village and recent bombings of minority Muslim mosques. Activists say the government has refused to amend the law for fear of a backlash from Islamist groups and their followers, who deem scrapping the law as un-Islamic. Pakistan's law minister did not respond to our request for an interview. Should Asia Bibi be hanged? In her hometown, the verdict? A unanimous yes. The town cleric called Asia's death sentence one of the happiest moments of his life. Tears of joy poured from my eyes, he said. The cleric's tears in stark contrast to those shed by 2 girls who want their mother to live. Reza Saya, CNN, Itanwali, Pakistan. Nous devons nous mobiliser, que c'est une cause absolument sacrée pour nous. J'ai voulu manifester ma solidarité et mon indignation parce que j'estime que
dans notre temps, l'idée qu'on puisse condamner à mort une femme pour des raisons d'eau et de blasphème, qu'on considère comme un blasphème, c'est absolument insupportable. Si le monde entier dit au Pakistan, vous êtes un pays ami, démocratique, ne vous laissez pas, ne succombez pas à la pression des fondamentalistes, alors oui, peut-être que nous aurons une chance de sauver Asia Bibi. Il suffirait que le président Hollande interpelle ses homologues musulmans pour que d'une seule voix, ils appellent le président du Pakistan à gracier Asia Bibi. Là, effectivement, nous aurons de fortes chances pour que ça marche. Toutes ces lois qui contreviennent à la liberté. तेरे खुदावंद ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज के दिन ये मौका बख्शा कि हम एक जगह पर इकट्ठे होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद अपनी इस बहन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ए खुदावंद इसको आज़ादी दे ताकि वो शुक्र अदा कर सके, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। ए खुदावंद कैद में तो इसके साथ हो जिंदा खुदावंद, ये हौसला और हिम्मत ना हारे, बल्कि खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। ऐ खुदावंद अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल कर, छोटी सी इल्तिजा को सुन, जवाब दे, यीशु के नाम में बख्श दे। मेरा नाम सांदल है और मैं पाकिस्तान की अदालत से रिहा हुई और मैं एक मुस्लिम जज की अदालत से रिहा हुई और एक मुस्लिम माशरे में रहते हुए जिन लोगों ने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया था वो कसूरवार होते हुए भी आज़ाद फिर रहे हैं और मैं बेकसूर होते हुए भी 1 साल 4 माह जेल में गुजारे हैं। मेरे 1 साल 4 माह कैसे वापस आएंगे? और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और ये कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बेगुनाह है उसको रिहाई मिलनी चाहिए और हमारे जो जज साहिबान हैं या हमारी हुकूमत है इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि ये कानून बिल्कुल ख़त्म किया जाए और ऐसे बेगुनाह लोगों के साथ इंसाफ। Pour une grande dame, pour Asia Bibi, que nous soutenons, et je voudrais vraiment remercier à la fois tous les élus de tous les bords politiques du Conseil de Paris qui sont ici présents, mes adjoints, des maires d'arrondissement qui sont ici, et bien sûr Madame Tollet qui a, on le sait, est condamnée à mort pour blasphème. Condamnée à mort parce que femme chrétienne d'une minorité, par des gens qui se réclament d'une foi mais que je considère être des hommes sans foi ni loi. On ne peut pas se réclamer d'une foi quelconque quand on agit. Croire en l'avenir parce que nous sommes aussi là debout et que nous parlons pour elle qui est privée aujourd'hui de la liberté et de la parole. Et puis nous sommes cependant satisfaites que nos luttes politiques féministes pour elle. Merci à tous.